हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम +2 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर पार्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 डिग्री 1 ऑर्डर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर I told the linear 1 degree differential equation dy by dx plus py equal to q. P and q are the function in x variable or constant, and other form dx by dy. First dy by dx with respect to x, independent variable, differentiate. Here derivative with respect to y, dx upon dy plus px is equal to q. Here p and q y variable में, y is independent or constant. So you know that an integral factor I told, e power integral p. If p function in the x variable, in that differential equation dx. If p is in y variable, then that dy. Okay, integrate that. That is integral factor and solution also. You know. So now continue forward. Exercise 9.5 NCERT, question 16 to 19. Last D question of this exercise. Last question. After that, miscellaneous will be there. Okay, this is the third type. First was the variable separation. Second was the homogeneous differential equation. Third is linear differential equation of 1 degree 1 order differential equation. Okay, so this is the lecture 16 on this chapter. 15 lecture over. Everything explained here. Now question 16. Find the equation of a car. कार की इक्वेशन फाइंड करो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होता है, यानी उसको पॉइंट दे दिया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें जो वेरिएबल कांस्टेंट है, सॉरी इंटीग्रल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये कंडीशन दे दी कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 बिकॉज दैट कर्व जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कर्व जो है वो 0 0 से पास हो रहा है, तो वो कर्व ही आंसर होता है। दैट्स व्हाई इन द डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म में जो आपका आएगा सॉल्यूशन, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ओके, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट है। स्लोप का मतलब dy बाय dx होता है। स्लोप का अदर फॉर्म dy बाय dx, स्लोप tan थीटा, स्लोप rate of change of the function. So derivative dy by dx slope, given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y at any general point is equal to the sum of the coordinate of the point. तो point है x comma y. So means according to question, what is differential equation? Differential equation slope means dy by dx. Slope is equal to sum of the point. देखो हाँ, इतने गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट है उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप होता है वो dy बाय dx होता है। टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx इस पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव दैट स्लोप टू द कर्व, कर्व के कांटेक्ट में है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप जो है वो इस पॉइंट पर dy बाय dx हो गया, एंड वो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, this. Okay, now this here, which type, p, what is p, compare, ये उधर जाएगा, क्या बनेगा dy बाय dx माइनस y यहां आ जाएगा इज इक्वल टू x वेरिएबल, ठीक। तो यहां p कितना हो गया, p -1, कंपेयर
and take and q equal to x. These value p and q here by comparing, so integral factor is equal to e power integral of minus 1 dx, then e power minus 1 dx x. So this is equal to 1 upon e power positive x. This we can say. This is your different integral factor of this differential equation. Then solution of this is called that curve. तो solution क्या होगा? Y into integral factor is equal to integral of q into integral factor into dx plus integral constant c. This is the solution. Then solution means this is curve. Then y into integral factor e power minus x or 1 upon e power x is equal to integral of q. What is q? Q is x into integral factor e power minus x dx plus integral constant. Okay, this is solution. Now integrate this. So here I let integral by part. So this is first, this is second. E power x is second. This is first. Okay. Then first as it is, first is x as it is, integral of second e पावर माइनस एक्स का माइनस से डिवाइड हो जाएगा माइनस वन से, e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन, तो माइनस e पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ होल derivative of first, derivative of x with respect to x, 1 into integral of second, then minus e power minus x dx plus integral constant. Okay, then this implies what is this? Minus x e power minus x minus out and minus this, so plus and e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल दोबारा फिर, तो e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल अगेन माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट. Okay, now this simplified, what is this? This is y into this e power minus x, y into e power minus x, y into e power minus x is equal to this. So this, then this is y into e power minus x is equal this is equal minus x e power minus x minus e power minus x plus integral constant. Putting here to find the particular solution, putting x equal to 0, y equal to 0, because this curve passing through origin. Okay, according to given, put this, then
y is 0, 0 into e power 0, 1. So 0 into minus 1, 0, equal to x is 0. So then 0 into something 0 minus e power minus x. So e power minus e power 0 minus 0, 1 upon e power 0. So e power 0 is 1, 1 upon 1 is 1, so minus 1 plus constant. So c is equal to 1. So this implies c equal to 1. So putting c value 1, then so required curve such that find the equation of the curve. ठीक है, तो required curve equation is this: y e power minus x is equal minus e power minus x common, then x plus 1 plus constant c is 1. Then solving this, if divided by e power minus x, then y is equal to divide by e power minus x. Okay, clear? Divide by e power minus x, then this minus x minus 1 divide by e power minus x, cancel, minus के अंदर multiply, n plus 1 upon e power माइनस एक्स से डिवाइड किया. ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस सॉल्यूशन. ओके, ये इधर आ सकता है कि एक्स प्लस वाई, ओके, एक्स माइनस का, देन दिस वी कैन राइट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द कार. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा, this also statement question to make the differential equation first and then find the solution, that curve. See that what is question? Question में कह रहे हैं find the equation of the curve passing through the point this. ये condition दे दी, curve यहाँ से pass हो रहा है. To calculate the integral constant c, x is 0 तो y 2. Given that ये differential equation क्या given है? Given that the sum of the coordinates, according to question, sum of the coordinate, okay, sum of the coordinate means of any point, that any point x comma y. So sum of the coordinate हो गया this, exceeds, sum of the coordinate of any point on the curve exceeds, exceed बढ़ जाता है, exceeds the magnitude, the slope of the tangent to the curve at that point by 5. ये 5 ज्यादा है तो इसमें से 5 कम कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? The slope of the tangent at the point of contact on the curve. This is dy by dx. Slope of the tangent is called dy by dx, in other words. Okay, clear? हाँ जी, this according to question, differential equation is this, differential equation. Okay, now make it simplest form और standard form. यानी ये हमारा क्या बन गया? x प्लस वाई माइनस 5. तो हमने उधर कौन सा ले जाना? dy by dx की ओर, माइनस वाई. तो वी कैन से dy by dx minus y is equal to x minus 5. This important thing. So compare and take value of p. P is equal to minus 1 and q equal to x minus 5.
these value of P and Q. So integral factor e power integral of P dx, so minus 1 into dx. This is equal to e power minus x. This is your integral factor. Done. Now, solution. So, solution of this differential equation y into integral factor is equal integral of q into integral factor into dx plus integral constant. Now, y into putting the value of integral factor e power minus x. So, e power minus x is equal to integral q. Q is x minus phi. X minus phi is q. Q into integral factor is e power minus x into dx plus integral constant c. This implies इंटीग्रल कर लो, क्या बनेगा u इंटू वी, सेम एल्जेब्रा, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज, तो x माइनस फाइव एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ e पावर माइनस x minus e power minus x. This is the integral. Okay, and minus integral formula, फर्स्ट का डेरिवेटिव होल अगेन इंटीग्रल with first का derivative and integral of second. Derivative x minus 5, 1 minus 0, okay, into e power minus x. तो minus e power minus x. Integral of e power minus x is minus e power minus x dx plus integral constant. Now this solution and curve y, putting here c value we can find. Putting what point, तो इस कर्व पर पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, 0,2, x 0, y 2. Putting this in the curve, find the value of constant c. Then y is 2 into e power minus x is 0. तो e power 0 minus 0 means 1 upon e power 0. E power 0 is 1. 1 upon 1 is 1. So into 1 equal this minus x is 0. 0 minus 5 and minus this, यानी plus 5. Plus 5 into e power minus 0. 1 upon 1. तो 1 into 1. तो means ये हो गया 5 into 1. This is 5. Clear? Minus minus plus 5 and x clearly 0. Okay? And then into 1. Done. Minus this. Again integral of this. Minus x minus 5 e power minus x and minus minus plus e power minus x integral again e power minus x plus constant. Now putting this value here, then it is done, e power 0 done, and then minus e power minus x to minus 1, okay, and plus c. This
Then simplify. This will come 5 minus 1 4, 4 इधर आएगा 2 minus 4. तो C is equal to 2 minus 4 minus 2. So final this. So use this here in the solution. Thus required curve. Thus required curve is y into e power minus x. E power minus x is equal to minus e power minus x minus ये minus common e power minus x common. Then what will left? X minus 5 and plus 1. This and plus C is minus 2. This, then this minus 5 plus 1, minus 4, we can say, and we can solve this. Divide by e power minus x कैंसिल हो जाएगा, इसमें यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और एज इट इज यू कैन से minus 5 plus 1 you can write minus 4. ओके, बिकॉज ये कॉमन कहाँ है, c तक कॉमन है, यहाँ से इसमें और इसमें e पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया और माइनस साइन भी कॉमन आ गया, माइनस ये भी माइनस ये भी, तो x minus 5 plus 1 बचेगा. ठीक है, देन दिस इज योर आंसर. So be careful about the statement and make the equation. Okay, next question same. What is next? हाँ जी बेटा, next question. Question 18. The integrating factor of the differential equation x dy by dx minus y equal to 2x square is A option e power minus x, B option e power minus y, C option 1 upon x, D option x. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, वी हैव टू फाइंड. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, x से डिवाइड करो और स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो. dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स किया, एक्स कैंसिल, माइनस y अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स is equal to divide by x to the x square, then only x will left. So now here compare this and take capital P value minus 1 upon x, compare with the standard form this and take P and Q. We are doing this. So Q equal to, this is 2x. डिवाइड बाई एक्स हमने कर दिया, बिकॉज ये 2x स्क्वायर था. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q. देन सो इंटीग्रल फैक्टर वी हैव टू फाइंड. तो हम जानते हैं इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx. ओके, नाउ दिस e पावर integral of p is minus 1 upon x, to minus out 1 upon x dx, integral of this with respect to x. This is antiderivative is log x, we know, so e power minus log x. Okay, and this is equal to, we know, n log m, log m पावर n. तो x पावर माइनस 1, x पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन x, और e पावर log m is m is 1 upon x. So integral factor 1 upon x is c part. So option C is correct. Option C, what is C? 1 upon x is correct.
Okay, done. So option C is correct. Done. Yes, beta. Next question number 19. What is the integral factor of the differential equation 1 minus y square into dx by dy plus yx is equal to ay? A option 1 upon y square minus 1. B option 1 upon root y square minus 1. And C option 1 upon 1 minus y square. And D option 1 upon root 1 minus y square. Now solution of this, divide by 1 minus y square. So dx upon dy plus divide by 1 minus y square, y upon 1 minus y square into x is equal to divide by 1 minus y square. Okay, this easy to take. What is here p? Compare p. This is dx by dy into px is equal to p and q in y variable. ठीक है, तो p क्लियर है y वेरिएबल, तो y multiplier of x, y upon 1 minus y square. This is p and q is in y variable, ay upon 1 minus y square. Done. So integral factor is equal to e power integral of p dy, because dx upon dy. ठीक है, this e power integral p value y upon 1 minus y square, the integral of this with respect to y into dy. This simplify to e power, let 1 minus y square is t, let 1 minus y square is equal to t, then minus derivative of y square 2y into dy is equal to dt. So this substitution here, so integral of minus y dy की वैल्यू 1 upon minus 2 out, and then dt upon t. This because y dy is equal to dt upon minus 2, यानी dt upon minus 2, यानी minus 1 upon 2 out, minus 2 dt divided by 1. Then this e power minus half log of log t, antiderivative. Okay, this equal to n log m. So then e power log of t power minus half. So log of 1 upon root t, नेगेटिव है पावर में तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे पावर में आ जाएगा 1 upon 2 मीन्स रूट. तो दिस सब्सटीट्यूशन अगेन, दिस इज e पावर log of 1 upon root t 1 minus y square. Then this is equal to e power log m. E power log m is m. So 1 upon square root 1 minus y square. This is your option D. D option is correct. So option D, 1 upon root 1 minus y square is correct.
तो MCQ D option is correct. Done. Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must forward the video to that student who are studying in 10th, 11th, 12th. अपने फ्रेंड्स को भेजें, उनको कहें 10th, 11th, 12th की सारे डिस्क्रिप्शंस में उनका एक लिंक मिल जाएगा। 10th क्लास की सारी वीडियो है, 11th की सारी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा, 12th का भी। तो उनको गाइड करें और उनको कहें कि सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, देन यू विल गेट everything, every video of every class, 10th, 11th and 12th. Okay, thank you.